Well, actor Vijay trips and falls after being mobbed at Chennai airport. Well, TVK chief and actor Vijay fell at Chennai airport on Sunday while attempting to get into his car. Well, Thalapathy Vijay trips and falls after being mobbed at Chennai airport post Jana Nayagan event in Malaysia. वेल आपको बता दें ये सब हुआ कल जब विजय अपनी कार में बैठने की कोशिश कर रहे थे। विजय लौटे थे मलेशिया से और विजय को ह्यूज क्राउड ने घेर रखा था एंड एज ही वॉक टुवर्ड्स द एग्जिट एरिया एंड मोमेंट्स बिफोर गेटिंग इनटू द कार ही ट्रिप्ड एंड फेल एज द क्राउड सर्ज्ड। वेल इसके बाद सिक्योरिटी पर्सोनल लिफ्टेड हिम एंड हेल्प्ड हिम गेट इनटू द कार। तो वहीं पर इस बात पे अभी तक ऑफिशियल्स का तो कोई कमेंट नहीं आया है। Well, several videos of Vijay stumbling and falling just before getting inside his car have also emerged on X handle. तो वहीं पर fans were also miffed with the way the actor's security team was unable to handle a crowd of 200 people. Well, Vijay के fans ने ये भी कहा that the recent tragedy that occurred at Vijay's political rally in Karur, Tamil Nadu on September 27, उससे भी 41 लोगों की डेथ हो गई थी और 100 लोग इंजर्ड हुए थे। Angry fans ने रिएक्ट किया, Thalapathy Vijay is all right, but we need some serious civic sense and crowd management. Another said, wherever you go, Thalapathy Anna, a huge crowd is vying together, so please travel only with proper planning and full security arrangements. लेकिन हाँ, तलापति विजय को क्राउड का मॉब करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी एक रैली के दौरान ऐसा हुआ था, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तलापति विजय के फैंस को अब लगा है क्योंकि एक्टर तलापति विजय has announced his retirement from acting career. He has decided to bid farewell to films after a long career of 33 years. Well, Vijay started his career at the age of 10 as a child artist in the Tamil film Vetri. At the age of 18, he made his debut as a hero with the film Nalaya Thiruppu. तो विजय ने ये अनाउंसमेंट की सैटरडे को ड्यूरिंग द ऑडियो लॉन्च ऑफ डायरेक्टर एच विनोदस फिल्म जना नायागन इन मलेशिया। विजय फिलहाल 51 साल के हैं और जन नायागन उनकी आखिरी फिल्म होगी। और वहीं पर फ्रॉम द स्टेज ही क्लियरली स्टेटेड दैट ही वुड नाउ फोकस एंटायरली ऑन पॉलिटिक्स। Well, Vijay formed his political party Tamiliga Vetri Kazhagam last year and now his party will also contest the Tamil Nadu Assembly elections जो 2026 में होंगे। Well, अपने फैंस को एड्रेस करते हुए विजय ने कहा, Only one thing matters to me. People come to theaters for me and stand in line. That's why I want to stand for them for the next 33 years. For these fans, I am retiring from cinema. He also said that he had to face all kinds of criticism from the first day of his career. Despite this, fans उनके साथ हमेशा खड़े रहे. Vijay said that he would never forget the love and support he received for 33 years.